Hello everyone, welcome to Akash. Today I am here to inform you about a very important information that has been announced by NTA on 5th of January, that is yesterday only. Now, डॉक्टर बनने की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन in the middle of it, do not skip such important informations or the announcements by NTA. ये announcement है regarding the updation of your certificates or IDs, right? First of all, it has mentioned that the updation of आधार कार्ड, alright, so बहुत ही important है आपकी जो आधार कार्ड ID है और जो आपकी UD ID है, that is if you have any unique disability, right, उसकी आपकी एक ID होती है, the category certificate like EWS, SC, ST, OBC, NCL, so these all have to be updated before filling the online application form. First of all, speaking of Aadhaar updation, so on Aadhaar card, what the notification says is the name, address, photograph, date of birth, biometric information, all of these have to be up to date, all right. Making sure आपकी जो photograph है, okay, it should match your current face, okay. आपकी हो सकता है जो photograph है वो 10 से 15 साल पुरानी हो, आधार बहुत पहले बना हो, तो make sure कि अभी वाली शक्ल उस आधार वाली फोटो के साथ आपकी मैच होती हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा important है. If not, then get it updated, all right. आपकी date of birth, address and rest of all the informations on your ID, Aadhaar ID, they have to be up to date, all right. Now moving on to the next part, that is the UD ID, right, that is the unique disability ID. If you have any, then make sure that ID is up to date, it is renewed as required, okay, it should be valid. And then comes the third one, that is the category certificate, because ये जो certificates हैं, that is SC और ST category certificates, ये एक बार बनते हैं, lifelong valid होते हैं. लेकिन if you are belonging to EWS or OBC, then make sure it says it is updated and valid. So basically ये एक साल के लिए valid होता है. तो अगर आपने last year, that is 2025 में April month के बाद उसको update कराया था, then there is no need to worry, वो अभी भी valid है. That means आपके application form भरने के लिए वो valid है. लेकिन counseling के लिए, that is after 1st of April 2026, it will not be valid anymore. Okay, so get it updated. अभी आपको अपडेट नहीं कराना है, नो इशू, क्योंकि अभी आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसकी एक साल की वैलिडिटी अभी भी चल रही होगी, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे यू विल नीड द अपडेट, ऑलराइट. सो दिस इज व्हाट NTA टेल्स सो फार एंड दिस वाज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. आई होप यू गॉट अपडेटेड एंड यू विल मेक श्योर कि आपकी IDs भी आपकी तरह अप टू डेट हो. थैंक यू सो मच.